Good morning, Namaskar, and she also said Sat Sri Akal and Adab. बड़ा सवेरे सवेरे मतलब काफ़ी मुश्किल होता है, you know. अभी तो मौसम चेंज हो गया है, but still we finding the वो जो ठंड है ना, अभी जैसे रुकी नहीं है. But I still see beautiful audience, lovely, हैं? और कोशिश करेंगे कि let's try to understand how to make our new India of tomorrow. The sensitivity of creating human settlement वो थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे यार, कैसा भारत बनाएं हम. ऐसा ना हो कि we are sort of so much globally empowered कि हम भूल जाएं कि हम हिंदुस्तानी हैं. We need to create Indian, sustainable, smart human settlement for tomorrow. We have great opportunities today. I will say sky is also not the limit for doing any work in India perhaps today. We are fast growing. I was a freelance. I started my career in 1970 as an architect, and now I can very proudly say I am a corporate. We have more than 150 people working in a consultant firm here in Delhi and trying to ambitiously grow and make my India. I don't know how many are architects here or how many are engineers here, but definitely all of us are Indian. We have the same synergy, understanding, and we are so much rich in the heritage. A history of about more than 2000 from Indus, recognized from Indus Valley civilization. But I don't know why we still फिर उधर देखना चालू कर देते हैं अमेरिका की तरफ कि शायद यार वो कोई चीज़ ऐसी ला के देगा जो बड़ी अच्छी होगी. एंड माइंडेड कभी हम ना दुपट्टा पहनते थे. वी हैव ए हॉट ड्राई क्लाइमेट, सो वी लेयर द बॉडी विद द दुपट्टा. और अभी भी आप रायपुर चले जाओ, कहीं चले जाओ, लोग बच्चे छोटे छोटे लड़कियां अभी भी ग्लव्स पहनती हैं सो दैट द स्किन डजंट गेट बर्न, एंड वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ बाय वे ऑफ माय ड्रेसेस. हाउ डू आई क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ ड्रेस कि मेरी बॉडी में जो हवा गर्म है ना वो किसी हिसाब से ठंडी होके अंदर जाए एंड स्किन बर्न ना हो. एंड सैडली अभी स्लोली क्या हुआ यार, हमारे कपड़े उतरने चालू हो गए, है ना. एंड नेवर माइंड, सर्दी है तब भी एक 20 सेंटीमीटर का ब्लाउज हो गया, है ना. और आदमी बाहर टेम्परेचर 5 डिग्री भी नहीं है, 2 डिग्री भी नहीं है, और हम 20 सेंटीमीटर के ब्लाउज में जाके और पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं. उसके बाद में घर में वही लेडी एक सैरिडोन की गोली खाती है या ठंड लग गई. So this is the imitation, the cosmetism, the mindset behavior which we are changing, and we are trying to paste, copy paste and adopting somebody else's culture. And उसको मैं समझना चालू कर दिया यार, I am becoming modern, you know. So my whole submission is touch of the soul. मैं अपने दिल से कैसे बात करूं. ये मेरा शरीर है यार, 5 भूतक शरीर, 5 एलिमेंट्स. ये भगवान ने दिया मुझे बना के, और किस लिए दिया, और साथ में 5 सेंसेस लगा दिए. सेंसिटाइजिंग दीज 5 एलिमेंट्स विद 5 सेंसेस, आंख, नाक, कान, 5 सेंसेस लगा दिए. और फिर मुझे उसने कहा, भगवान ने छोड़ दिया, अब तू इस वर्ल्ड में आया है, अब तू देख. Now it's perhaps your 5 elements with 5 senses. You want to go to the 5 vices or you want to go to the 5 virtues. That depends on me. अब मैंने किधर जाना है. मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और जिसको कहते हैं ना 5 vices, उधर जाऊंगा तो I'll become worldly, materialistic, cosmetic, zigzag, you know, like Times Square, New York, Manhattan, or
I sensitize myself with the 5 virtues. When I sensitize with 5 virtues, I have a touch of my soul. Then I will just elaborate that then it comes the architecture where there is a soul. It is for 3 P's, that is place, people and purpose. If I define my architecture, for whom I am making, where I am making, and what is the functionality, then I will get the truthfulness of architecture, I will get organism of the architecture and organic architecture. So I'll just start my presentation. I'll take you glances through just passive ways of development. शायद जैसे मैं उस तरीके से सोचेंगे तो यार बाहर जो स्टॉल लगे ना कि यार फिर एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है, यू नो, मे बी वो मैं दुकान बंद करने नहीं आया किसी की कि वो कोई सोचे यार मैं एयर कंडीशनिंग के लिए कह रहा हूँ ना करो. बट कैन आई सेंसिटाइज how to reduce, how do I see the nature, how do I see the oscillation of sun and do anything which responds to the nature. That is my today's attempt with you to be touch of the soul. So now it's about 52 years I've been practicing, and I generally say that any build mass should not be taken as a mass of brick and concrete, but as a living organism which grows, which is embodied with nature. And I say, yes, this is green architecture. Any building is like my mother. I am mother, that child. And it is through my motherhood that building or the child has grown, and I give that affection to that mother, to that child as a mother. Mind it, there is a difference between a motherhood and a womanhood. You know, आज के ज़माने में motherhood मिल जाती, motherhood तो है ही है, लेकिन आज womanhood मिल रही है. In womanhood, I borrow a motherhood, a womanhood, and I put the sponge, and I say, yes, she is the one going to, you know, conceive my child into that womanhood. And that child, perhaps, when it grows and I get the child, that child doesn't have the emotions, the sentiments which the motherhood will give you. In motherhood, अब जब mother बच्चा पैदा करती है ना, तो कितना प्यार करती है यार उसे. अब बच्चा हो रहा है, बन रहा है, तो वो गोलगप्पे नहीं खाएगी, खट्टी चीज नहीं खाएगी, ये बच्चे पे असर होगा, है ना. वो कोई ऐसी एडल्ट पिक्चर देखेगी, वो मंदिर जाएगी, वो आरती करेगी, just to give good sanskar to that child. The mother is sacrificing. Similarly, if an architect, any building is like your own child. It is grooming the building from my motherhood and not for Americans' womanhood. Today we are making everything, borrowing the vessel of American thought, and I said, मैं पैदा कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा. I am enslaved. I am still looking after the technology, the various other things together from there, and मैं इधर ले आता हूँ. यार देखो सर कितना बढ़िया product, you know, and I start marketing it, sensitizing ourselves to understand what is required by the Indian market is very, very important. This subcontinent is different than American continent. We need to understand that. That is, you know, I wish that we have global, not empowerment, but intervention. Intervention, I understand from my mental, and from my mindset, then I start implementing. So, whole deliberation today, we'll just talk about this. This is my son Gurpreet Shah, who is looking after, you know, my legacy, and he is an urban designer. He is looking into the, you know, today's contest of architecture. I said 3 P's: place, people, purpose, for whom I am making. If I understand the place, I will understand to dig out the heritage, the culture, the religion, the socio-economic factors of the place. Then the people.
and then comes the purpose for which I am making. So this is how I was very happy. It's like now like nomadic to robotic. I was very peaceful. बैठा हूँ पेड़ के नीचे. When I was nomadic, I was very peaceful. आनंद में था. अब वो सिकंदर आया था तो सिकंदर कहता है यार मैं क्या करने आया. कहता बड़ी मेहनत कर रहा हूँ यार, हिंदुस्तान फतेह करूँगा. कहता फिर मैं बैठूंगा, फिर मैं आराम करूँगा. लेकिन ही कुंट, वो मर गया, रास्ते में मर गया. एक साधु बैठा था पेड़ पे, वो कहता मैं तो अभी आराम कर रहा हूँ. व्हाई वी आर इनटू अ रट रेस. एंड मैं सारी चीजें मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ. एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ. क्या कहते हैं ना, मैं इसमें बहुत खुश था. पेड़ के नीचे बैठा हूँ, फिर कूलर आ गया. आई हैव सीन ऑल दिस. आई बॉर्न इन ए रेफ्यूजी कैंप. आई वाज लाइक दैट. फिर कूलर आ गया 1960 में. फिर हमने कहा अब कूलिंग सिस्टम ये हो गया. अब उसके बाद में देन आई वाज विद एयर कंडीशनर, बाहर भी लगे हुए हैं. एंड उसके बाद में फिर अब दिल्ली PM 2.5 is raising to 400. I am a passive smoker. I smoke 40 cigarettes a day. But I say proudly, I live in the capital city of India. That's my petty thing which I am seeing. And अभी क्या हुआ कोविड में, अब तो प्योरीफायर आ गए कमरे में, क्योंकि फ्रेश एयर इज वर्स देन माई इनसाइड एयर. वो कहता है फ्रेश एयर ले आओ यार. अभी मैं बात कर रहा था उनसे, कहते इसमें ऐसे फ्रेश एयर आ जाएगी. मैं कहा बाहर तो वो गंदी है, अंदर से भी बाहर गंदी है, तो फ्रेश एयर कहां से हुई वो. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. देन दिस इज, अभी तो कोविड में सिलेंडर भी आ गए. हो सकता है हम मास्क लगा के, इतना PM 2 बढ़ जाएगा, हर आदमी मास्क के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चल रहा है. और कहाँ रह रहे हो यार, दिल्ली रह रहे हैं. सो दिस इज गोइंग टू हैपन. इन के इट्स एन अलार्म टू अस. कहता है यार धरती तो वहीं रहेगी. कोई कहता है धरती को रेप हो रही है, धरती ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरी भारत माता पता नहीं क्या क्या. हम कल तरह गंगा मैली हो गई थी, पिक्चर आई थी. हम पता नहीं क्या क्या मैला कर रहे हैं. एंड देन अगेन वी प्राउडली से यार संगम है वो, वहां नहा लोगे पता नहीं स्वर्ग चले जाएंगे. कबीर कहते हैं यार जगह से क्या फर्क पड़ेगा यार, डम्बे चला जा तब भी तू स्वर्ग जाएगा. योर एक्शंस विल स्पीक आउट. आवर सिटीज विल स्पीक व्हाट एक्शंस वी आर डूइंग टुडे. व्हाट इज द sort of mental set which we have, that we have to understand. नहीं तो क्या है यार, हम सारे रेस में लगे रहेंगे, FDR देखते रहेंगे, पैसा बन जाएगा, प्रॉपर्टी ले लेंगे, वहीं रह जाएगी और सिटी खराब हो जाएगी. So let's consciously look into it कि how we wish to do our cities, how we wish to live. Do you think I want to live in a closed door? अभी आजकल luxury apartments, go to गुड़गांव, वो कितने का है, वो मगेलियम या वो कौन सा है, कमेलियन, कहता 32 करोड़ का. मैंने कहा उसमें क्या है. कहता सर बिल्कुल सारा बंद है, डबल ग्लास लगा है, सेंट्रली एयर कंडीशन है, नो फ्रेश एयर. दिस इज व्हाट आई, बट इट इज ऑल ग्रीन आउटसाइड. उधर क्लब बना हुआ है, वाटर बॉडी है, लेक है, बाहर सब कुछ है, लेकिन अंदर उसकी हवा नहीं आएगी. I live in a place which is all closed with double glass, centrally air conditioned. वही हवा is like air syndrome. दिमाग खराब हो गया. मैं वही स्टेल एयर को कितने फिल्टर लगा लूंगा, कोई फिल्टर साफ ही नहीं करता ऊपर, है ना. तो ऐसे मैं वहां रह रहा हूँ. So now we have to be consciously look into it. मैंने रहना कैसे है, So this is what. मैं बड़ा खुश था यार. मेरा ये ऑडिटोरियम है पूरा, अब नाउ फ्रॉम हियर वी शिफ्टेड हियर. आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, वी विल नॉट हैव दिस, बट कैन आई सी दैट 80% ऑफ माई लाइफ इज लाइक दिस. आई एम नॉट ऑलवेज लाइक दैट. सो दिस इज हाउ आई वॉज हैप्पी. कोर्टयार्ड, म्यूचुअल शेडिंग, मैं वो छोटी छोटी चीज़ों के साथ आपके साथ बात करूंगा जो आप रोज देखते हो. वो हम टूरिस्ट बन के जाते हैं यार. आज चलो यार जयपुर चलें, हवा महल देखेंगे, लेक देखेंगे,
लेट्स गो एंड लिव इनटू लेक पैलेस, वहां रहेंगे, लेकिन कमरा तो वहां पे भी एयर कंडीशन है अंदर. That's the pity. So how do you reflect to all these things put together? Do you think the great heritage is only to be seen as a tourist or to be involved into practice of architecture? Because कभी-कभी हम कहते हैं वास्तु शास्त्र. I am not talking about phonetic वास्तु कि यार इधर सो जाओगे तो मर जाओगे, नॉर्थ में सिर आ जाएगा तो ये हो जाएगा. नहीं. I am talking about Vastu Shastra, where I say in a hot and dry climate, north is the lowest, southwest is the highest. And why it is like that? Unless and until I start to look into my Vedas, look into the various other understanding, you see, अबे यार अभी जंतर मंतर है यहाँ यार, हैं? वो तो जय सिंह, राजा मान सिंह उन्होंने बनाया, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं क्या है ये. We need to understand. That is how Jaisalmer, mutual shading. So cut the hot sun. Let the sun doesn't go into the street and I am comfortable at 2 o'clock in daytime. मैं बैठा हूँ आराम से, इतना जून के महीने में यहाँ बैठ जाओ. Water, conservation, आज कहाँ कर रहे हैं हम? कौन करेगा? हम फिर कहते हैं यार पानी नहीं मिल रहा. All this अब अपना कसूर हो रहा है ना. कैसे करेंगे? नाउ ये तो हिस्ट्री हो गई कि यार जाली लगी थी और यहाँ से I do it's hot air, I do cool air. Simple thing. मैं इसी को अपनी बिल्डिंग में I try to layer my building. I try to envelop my building. Layering the building by itself will make it cool. और now अभी मैं क्या लेयर कर रहा हूँ? डब्बा बनाओ शीशे का, डबल ग्लास, चारों साइड, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, टावर है. न्यूयॉर्क, मैनहट्टन, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई लगा दो और फिर देखा हीट आ रही है, डबल इंसुलेटिंग ग्लास. अब दिस इज नॉट सस्टेनेबिलिटी, दिस इज नॉट इनोवेशन, इट इज नॉट स्मार्ट. आई डू स्मार्ट. पहले मैं बिल्कुल कपड़े पहने ही नहीं हुए. या आजकल लोग कहीं बड़े कहते हैं यार मुझे तो नींद ही नहीं आती यार, सर्दी हो गर्मी हो, मैं तो 16 डिग्री टेम्परेचर करते हूँ और कंबल करता हूँ. अब इससे और बेवकूफ़ी क्या होगी है? मैं फिर करके कंबल कर रहा हूँ और वैसे बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री है. सो दिस इज द क्रिमिनलिटी विच वी आर डूइंग. भगवान ने ना हर चीज बड़ी बैलेंस करके बनाई. सीजन्स, इन गुरबानी से रात्रि, रुत्ति, तिथि, वार, पवन, पानी, अग्नि, पाताल, सब कुछ दिया भगवान ने. डे एंड नाइट, सीजन्स, एवरीथिंग उसने तो पूरा दिया और हम उसको मिस यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स. दैट्स व्हाई व्हाट वी क्रिएटिंग इज नॉट नेचुरल. और नहीं तो हवा तो बिल्कुल साफ थी. आज दिल्ली की हवा किसने खराब की? हमने की. क्यों कर रहे हैं ये कभी हमने सोचा नहीं. तो नाउ दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन. सिंपल घर, नॉर्थ इज द लोएस्ट, सामने बैठक है, कोर्टयार्ड है, किचन है और ये इसका सेक्शन है. यही हमने देखा जो गांव में रहता है ऐसे घर में रहता है कि आगे वाली साइड में नॉर्थ ईस्ट है, बैठक है, मैन फोक बैठा हुआ है, थोड़ी सी धूप सवेरे आती है, बड़ी अच्छी लगती है और उसके बाद में सन ऊपर चला गया, पीछे चला गया, साउथ वेस्ट कस द सन इन द कोर्टयार्ड, देयर इज नो सन, पेड़ लगा हुआ है, वहां आप कोर्टयार्ड में बैठो, आराम से मैं सो रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए एयर कंडीशनिंग. मैं क्यों कर रहा हूँ? आई एम जस्ट आस्किंग माई सेल्फ why I am creating the artificial world from a natural world. That is the fully. मैं कहता हूँ एडवांस हो गया यार, मॉडर्न हो गया यार. मैं देखा ना मेरे घर में क्या जबरदस्त है ना. So this is how that is what is required. कहाँ गई wind? Velocity of wind, the intensity of wind. How do you do the wind resource management into your habitat? Can you control that? Can I see that from 44 degrees temperature I reduce to 26 by layering my landscape, barriers, within the landscape, water bodies, other things. जब तक हवा मेरे घर तक आए
तब तक वो 26 डिग्री हो जाए तो एयर कंडीशन की जरूरत नहीं. Can I do that? That is passive ways of development, and I do this. I'll not go through this, various type of landscaping. How do you do this? How do you do this? And see this. This is, I am layering my landscape. There are two aspects in any of the build form. One is the building, other is the surrounding. अब surrounding में मैं क्या करता हूँ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं घास लगा दो, पेड़ लगा दो, जहाँ जहाँ मर्जी लग जाए. ना तो मैं देखता हूँ विंड डायरेक्शन क्या है, वाटर बॉडी कहाँ लगानी है. In case I am able, see outside temperature here is 44 degrees. Through silver oak, Ashoka, peripheral, high, long trees, let the hot air come in, comes inside, then I have evergreen free trees like neem, gulmarg, others, then I have a water body. उधर से हवा आ रही है, एक बड़ी तेज हवा आती है, और उसकी स्पीड को रोकना है और गर्म को ठंडा करना है through the plantation also with bigger leaves, so that leaves are moist, they have the humid, and once the air travels through the leaves, it gets cooled up, touching the leaves, and it goes again from the water body to shrubs. चांपा लगा दिया, और चीज लगा दी आगे करके, then it comes to the building, and building is also enveloped, layered with penicillins, with jali, and then the cool air comes inside, which is very comfortable to me. And in case I need more, I can have some alternative ways of air conditioning, air cooling system, non-conventional ways of air cooling. So how my stress today would be only on the left-hand side. It's like shape and size of the building. How do you stimulate? Today we have tools. I can stimulate the building. I can create shape and size of the building. When I'm creating that shape and size of the building, I see with the solar oscillation, sun path, and I see what is the shading like. How do I see that I do minimizing heat gain into the building and maximizing daylight into the building. And maximizing daylight means glare free in the hot and dry climate. I get maximum of north, I get shaded south, I do not have any penetration of the harsh west sun. So these are certain things again. So I talk about. Now I will just put in that we are into all these residential, commercial, airports, railways, metros, land ports, spiritual centers, institutional, industrial. We were the ones we did at Gol Pahari, staff housing for Terry, who gives the GRAH rating. So we were just doing this. So this was the staff housing. Now you see the placement. All blocks are north and south. And now see this. This is the plan. This is now how you envelop the building, how you layer the building. You see the gray hairs, this thing. Gray is all secondary areas, kitchen, bathroom, balcony, staircase. So it's like it's become a cushion. My living areas are inside. बाहर के सारे सर्विस एरिया आगे, जहां मैंने 15 मिनट बाथरूम में जाऊंगा, आधा घंटा किचन में लगा लूंगा, फिर मैं लिविंग रूम में कंफर्टेबल बेडरूम मेरे बीच में आ गई. सो इट्स लाइक लेयरिंग डिजाइन वाइज. मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, अंदर के एरिया कंफर्टेबल हो गए. सो डबल लेयर हो गया. नहीं तो मैं कहता हूँ यार यहाँ ऑटो के ब्लॉक लगाओ, इधर ये करो, इंसुलेटिंग लगाओ. मेरी प्लानिंग में ही आ गया. दिस इज हाउ इट इज डन. This is how through the landscape you make it cool. Water body, landscaping, automatically. And then in case still I am unable to control, I use earth air tunnel system. I go down 4 meters, take the hot air, नीचे से लेके जाऊंगा. जमीन नीचे मेरी 4 मीटर बिल्कुल ठंडी है, मॉइस्चर है, उसमें से हवा निकल रही है, ऊपर आ गई, और उसमें ह्यूमिडिटी भी नहीं है. मैं कूलर लगाता हूँ, उसमें ह्यूमिडिटी आ जाएगी, पानी मॉइस्चर आ जाएगा. ये ड्राई वे से मेरी
air gets cooled up. So this is how we do. These are some of the commercial buildings. Times Square Mall in Chennai Airport. Client हमें कहता है यार यहाँ पे तो इतना मुझे 18 रुपये 20 रुपये स्क्वायर फुट का मेंटेनेंस कौन देगा? तो मैंने कहा यार हम तेरा नॉन एयर कंडीशन मॉल बना देंगे। वो हंसने लगा। ये बैठे हैं सर हमारे इतने बड़े महान रियल इस्टेट प्लेयर, तो लेकिन हमारी भी आदत है पंगा लेने की सर, हैं? क्योंकि हमें पैशन है, क्रिएट समथिंग विच इज नॉन कन्वेंशनल। हम कॉपी पेस्ट, ओ यार वो वाली बिल्डिंग देखिए ना जो हांगकांग में बनी है, वैसी बना दें यहाँ पे। दैट इज द फैंसी एंड अल्टीमेटली वी फॉल इनटू द ट्रैप एंड हमारी बिल्डिंग्स हमारे से दूर चली जाती है, हमें लगती नहीं है कि हमारी है वो। यू नो दैट इज व्हाट आई से। ये टाइम्स स्क्वायर मॉल नॉन एयर कंडीशन based on again sun path, north east the lowest, south west the highest, taking the lead from mutual shading. Courtyard में sun ना आए, this is what we did. जाली, दुपट्टा, inspired. बिल्डिंग को लेयर करो। आप दुपट्टे में कितने सुंदर लग रहे हो यार, you know, लेयर किया हुआ है, you know, it makes a difference. हम बिल्कुल अब see this layering is कि हार्ड सन मेरी बॉडी को, स्किन को खराब ना करे। तो मैं उसको, नेचर को तो समझना है, तो मैं उसको बिल्डिंग लगा लूं कि वह बिल्डिंग को लेयर कैसे कर रहा है। आई यूज दिस इन लेयरिंग माई बिल्डिंग एंड वी डू दिस विद स्टिमुलेट। आज तो है ना, स्टिमुलेशन करो, बिल्डिंग को मूव करो, इस एंगल में करो, ऐसे करना है, ऐसे करना है, एंड सी दैट हाउ minimizing heat gain into the building. कैसे आएगा वो करो। Now this take from lead from India Habitat Center, बाहर के लूअर लगे हैं कोर्टयार्ड में, आराम से जून में जाओ, बैठो, बिल्कुल टेम्परेचर कूल है वहाँ पे। So take this is the jali which we have used in this complete periphery, layering the building with this jali. And Dr. Raman was the chief minister that time, और उन्होंने इनॉग्रेट किया। 8,000 आदमी थे उसके अंदर, किसी को गर्मी नहीं लगी। सो दीज आर सर्टन थिंग्स कि इसको कैसे हम यूज करें। यू नो इफ वी स्टार्ट यूजिंग इट विद आवर माइंडसेट, इट्स लाइक पुटिंग 3 whys. Why I am doing this? First question to yourself, ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये डिजाइन क्यों बना रहा हूँ? You will get some answer. Again you say why. Again you say why. You will get the answer and you will do the perfect thing which is absolutely sustainable and is embodied with nature. This is how this was done. This is a club. Now this we were again doing in Raipur. बहुत शेप इसकी ऐसी हमने बना दी। पहले जब बनता है ना तो आर्किटेक्ट कोई बड़ा होता है, यार पंगे ले लो, कोई ऐसी चीज बनाओ बड़ी अच्छी लगे, और फिर वो क्लाइंट ने कहा बनाओ। अब बने कैसे? You know how this can be made. Then we made the mock-ups 1:10. यार ऐसे बनाएंगे। What is the material like which has or which can take double, triple curves? How do you do this? So this is how we did the house. Now it is going to be finished. So it's like when you're talking about something very ambitious, very dynamic, very iconic. How do you do these type of projects? I'm not that always you need to be यार बिल्कुल साधुओं वाली बिल्डिंग बनानी चालू कर दे यार, नॉन एयर कंडीशन, एयर कंडीशनिंग नहीं है, ये भी नहीं है, वो नहीं। नो, हैव सम सॉर्ट ऑफ ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल थिंग्स पुट टुगेदर। नाउ फ्रॉम दीज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, नाउ आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट वी बीन एबल टू, आई मीन पीपल कॉल मी लाइक एयरपोर्ट किंग। व्हाई? बिकॉज वी डन मोर देन 52 airports. 52 airports. We are the one maximum credentials if somebody has in the airport, that is creative group. We are Indians. All these guys from outside, they borrow our credentials. I am just saying that we are no less than any global player. All of us can become players like that. And Americans work with us in our office. We can employ them. Why imitate them all the times? That is what I wish to say, that हम सब लोग, कोई KPMG पे काम कर रहा है, कोई कर रहा है यार JLL में, कोई JLL नहीं बनना चाहता, कोई KPMG नहीं बनना चाहता, कोई एजिस नहीं बनना चाहता, कोई AECOM नहीं बनना चाहता, लेकिन हम उनके पास
I am the director, I am the partner. All these bigger companies have 100% practically Indian working there, but we are not the owners. That is what my impression is today. I just want to impress upon, आओ यार भारत को भारत बनाए, भारतीय बनाए, क्योंकि अभी भी जो है ना KPM जो वाला बना रहा है, you know, वो बैठा हुआ अंदर मिनिस्ट्री में JLL वाला, पॉलिसी मेकिंग. We think that the Goras are better, हैं? भारत मेरे लिए बनना है, and we slogan हमारा है Make in India, Made in India. Why not made by India? Why not we, the Indian planners, Indian architects, we are no less than anybody else. हम क्यों नहीं बना सकते? क्यों यार? कहते बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे किसी ने बनाया नहीं. वही आता है ना, तो अरे यार हमें मौका मिलेगा तो बनाएंगे ना. So that is what is required. I have my soul as an Indian soul. मैं जो बनाऊंगा ना दिल से बनाऊंगा. वो बाहर वाले को क्या पहले तो समझेगा. You know, we were doing for like Kartarpur corridor. We were doing for Statue of Oneness at Madhya Pradesh. We were doing for Bharat Kund at Ayodhya. We need to understand Ramayana. We understand Gita. We understand Guru Granth Sahib. When we talk about all these things put together, and once I put that into architecture, then I put soul into architecture. That is precisely, I wish. Now, this is one of my first airport, Chennai Airport. You know, we did about 10 years back. It's for 2,500 crore project that time with 2 million square meters of an area, and we did it in 4 years. We brought technology. It's like not global empowerment, but global intervention. We did the largest cantilever in the world of 80 feet in this. We were the first one to bend half a meter pipe, 16 mm thick in India, first time. We made the thinnest flyover, which is just 400 mm, steam cured, you know, absolutely, with 80 mm vapors, first time in India. Not that when the technology comes, we need to understand globally, and when it comes to design, it has to be absolutely Indian. So that is what I wish. This is what we did, intermodality. We are the first one to create intermodal hub in India. Airport modes of transport were connected 10 years back. Railways, highways, metro, and the aviation, the international and the domestic were connected with 40 walker later. We created another layer where it is walkable. So this is what we did. This is how metro station we did. But mind it, now I'm just showing you this. This is my terminal building. It's like micro to micro level. The understanding is the same. North is the lowest, southwest the highest, mutual shading. How do you cut the hot sun? How do you protect your building from heated west sun, cleared west sun? ये हमने बनाया, 30 मीटर की प्लेट बना दी, बीच में ग्रीन कर दिया, and this is, we use all these elements. Even car parking is green. Now this is how the car parking we propose, that there is no heat transfer from conduction, convection and radiation. Even the surroundings are green, the radiating heat will not go inside. And this is the section. Now, where I have 24 meters cantilever, that is south and southwest. So I don't get any glare on my glass from the outside sun. And that side is north and northeast. I will cantilever about 12 meters. Even no glare sun enters and hit my glass. So it's like no conduction, no convection, and no radiation, because the outside car park is also all green. So no radiating heat will also go inside the building. It's like passive ways of reducing heat, reducing energy by reducing heat. This is how created this. Very brownfield, very difficult to make. There are a lot of challenges. I just wanted to show you this. How these V columns were made, how the flyover was made. Vadodara Airport. Again, this Modi ji inaugurated about now I think 10 years back, 9 years rather. It's the first Modi one, and this absolutely sustainable platinum rated clean airport.
This is how we do. Now, front is again, that is north and north-south, which is protected by cantilever. And this side is the west side. No window. He doesn't go inside. So this is how you protect your sun from west and from practically east-south. This is how we do all this. This was inaugurated, and this has no false ceiling. It's absolutely without false ceiling, no echo and no acoustics, nothing of that nature. All things are resolved in a manner. And this is Agartala. We did first very dynamic, complex structures. Then we said let's simplistic be dynamism. So that is how now Agartala is absolutely plain roof. See this again, but character of Agartala, the bamboo effect, the art and architecture of the area, all that we try to put in this from these three components which are there in Agartala. All this in the Tripura art, all this we tried inside. This is how this was done. See this art. So it's local flavor. It gives me belongingness. Oh yes, मैं यहाँ त्रिपुरा पहुँच गया. All those characters will reflect upon my Indian character, my local character, my state character, my people's character, and that's why we say 3 P's. This is how. Then from airport we come to railway stations. We have about 28 of the railway stations which we are doing all large projects like Howrah railway station, Chennai Airport, Ghaziabad, Ambala, Coimbatore, and Loknaik, Bombay, Bandra, many more, like Kota, Agra, all these are being developed. Now, by 2024, you will find absolutely better than airports, the railway stations, at least 200 of the railway stations will be revamped totally, into commercial hubs, into mixed use development. The land parcel of railways is being used, the sky, the city, the airspace where the tracks are there below, उसके ऊपर तो कुछ अभी तो बना नहीं कभी खाली पड़ा हुआ है. तो मैं 12 मीटर ऊपर करके पूरा उसको कंप्लीट करके ऊपर मिनी डिस्ट्रिक्ट सेंटर बना सकता हूँ. Today railway stations are becoming like intermodal hub, metro, interface, pedestrian, all those things are coming. Then railway station पहला बना जब नई दिल्ली में, तो इधर से ट्रैफिक ज्यादा हुआ तो हमने अजमेरी गेट भी खोला. अब all the railway stations are going to be opened, 1 side, 2 side, 3 side, 4 side. They are address routes, convenience to the people. और आराम से निकलो, आराम से जाओ. Arrival is at one level, departure is at other level, multi-level like bigger airports. दोनों arrival और departure अलग हैं. So pedestrian is separate, traffic is separate. All these are having the large concourse hall, old areas, and you only come to the platform 5 मिनट पहले जब ट्रेन आएगी. उससे पहले आप आराम से ऊपर कंफर्टेबली मसाज करवाओ, कुछ करवाओ यार, सब कुछ होगा वहाँ पे. So that is what is happening. So this is Ghaziabad, now under construction. All this is happening. I will not go into the design details, but this is now under construction. Charbagh, Lucknow, keeping the heritage, how the interface between the heritage and the modern architecture, the contemporary architecture had to be interfaced. So that is what we are doing. This is how that's happening. Again, connectivity between the metro, the other side again we developed the new railway station, the Charbagh, front is the retain the heritage. All this is very ambitious project, but today in case we have the opportunity, we must see that we don't do anything wrong. Not that. So visioned planning has to be there with lot of wisdom, lot of interface. It's not like only architecture, it's like architecture and beyond. We need to have larger players in urban design, urban planning, financial, all are interconnected. Project management, construction management, design management, and quality management. All these are there, and minded, these are projects where they're not simple, नीचे गाड़ी चलती रहेगी, ऊपर मैंने बनाना है.
हाउ 24/7 गाड़ी चल रही है, नीचे से कॉलम उठाने हैं, ऊपर जगह बनानी है, तो टेक्नोलॉजी also plays a very vital role. You need to sensitize yourself how the whole methodology will also work. This is how you see this. These are plans for the Charmag railway station, keeping the heritage. This is the concourse, large concourse waiting area. This is Chennai Airport again, very large projects about 1,300 crore, which is also under construction. You see this, the concourse area, the other areas, and how we try to even the interior speaks of Tamil Nadu architecture. All this needs to be reflected. The language has to be outspoken with the people. The purpose. How to define that? Why? मुझे पता लगे यार, मैं तमिल में आ गया यार, मैं यहाँ आ गया, कुछ तो पता लगे। नहीं तो अभी मैं कहीं जाता हूँ यार, गुड़गांव जाता हूँ, वही बिल्डिंग है, मैं वहाँ न्यू इंडिया मॉल में चले जाऊँ, नोएडा में भी वही बिल्डिंग है ना, और किसी चले जाओगे तो वो भी वही बिल्डिंग है। So that identity crisis of the place, if we are missing, so let us see that we create that sort of belongingness. We made Bhubaneswar Airport, तो हमने ऐसा बनाया बिल्कुल जैसे लगता है जगन्नाथ चैरियट, फुल करते हैं जगन्नाथ चैरियट, तो we use Konark wheel as chariot wheel, मैं टेम्पल मोटिव्स लगा के बिल्कुल चैरियट बना दिया, जैसे तुम यार बोल हाँ जगन्नाथ बाबा जगन्नाथ, it's like spoken language which makes a connect, and that is the emotion, and that's why we say architecture is not a dead mass. हम कभी सोचते हैं बिल्डिंग तो यार एक मिट्टी है, नहीं, इसमें सोल है, आत्मा डालेंगे ना तो बोलेगी वो। अभी मेरा अक्षरधाम टेम्पल्स मेट्रो स्टेशन एट गांधीनगर, और उसमें हमने अक्षरधाम टेम्पल की वोकैबुलरी लास्ट स्पैन में डाली, वही कृष्णा। That is, we need to speak out. Architecture is a spoken language without language. So that has to be understood. ये इसको वो इंजीनियरिंग है जो डेड है, वो कर देगा किसी, मैं don't mind my language, he will वो डब्बा बना देगा, वो उसकी आगे इनोवेशन नहीं जाती। यार ऐसा बनाऊं कि ये लगे यार मैं यहाँ पे आया ना, ये बर्ड्स के विंग है और ये एयरपोर्ट, दैट इज चेन्नई, बर्ड विंग, विंग्स ऑफ द बर्ड is speaking the language of my vocabulary of architecture. So that is the type of thing we need to do. This is how all this is being done. Chennai new railway station on the other side, entry to the Chennai Airport. This is land port. मैं एक दिखा रहा हूँ आपको कि एक रेलवे स्टेशन में क्या हो रहा है। Land port. I was very fortunate being a Sikh, being a Punjabi, being an Indian, got an opportunity to create Dera Baba Nanak Kartarpur Sahib. मैं बड़ा खुश हुआ यार। I want to see my Nanak in Dera Baba Nanak. So that is what I put the language of Gurbani, touch of Nanak's universalism. जो नानक से काफी करना, किरत करो, नाम जपो, वो बन चुके। तीन चीजें हैं नानक दी, वो बात नहीं हुई। That is the Nanak speaks. When Nanak is speaking, तो आपे बन की जगह, वो फिर उठे जाओगे कहते हैं दान बाबा नानक। That is the language which the architecture will speak, and that is what we did. This is how, based on Khanda, the sign of unity, universalism, and oneness, that I put here, and that is how we did this. And a project, a 400 crore project, finished in 4 months' time. Only 4 months' time. Imagine, this was a magic, not my magic. Nanak's magic. We were able to complete that. और वहाँ मोदी जी आए 9 नवंबर को 2019 में इनॉग्रेट किया. He was pleasantly surprised. सेल्फी ली वहाँ. And that's the only project जहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी कंसल्टेंट को क्लाइंट बुला के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में होम मिनिस्टर ने बुला के और हमें थैंक यू कहा, नहीं तो गालियां पड़ती हैं हमेशा, है ना? He was acknowledged. Yeah, you have played with technology because 9th को 550th नानक का
वो था, पाकिस्तान ने बना दिया था, हिंदुस्तान बना रहा था, तो हमने उसको, हमारा प्राइड था यार, 300 फुट ऊंचा हमने झंडा बनाया, यार उधर से भी नजर आए, है ना? So that is the type of glory which we wish from any place, यार yes, हिंदुस्तान नजर आए, that we did. So this is how, again, this is the night shot. It was not easy, I'm telling you, it was not easy. Home secretary was there 24/7. We were there. हर टाइम पे हमें घबराहट, झक झक, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, लेकिन हो गया. So that is what I am just showing how this was done, how all these things are done. And here, यहाँ इक्योंकार, God is not one, God is only one. And where does God live? God lives within His own creation. वो तुम्हारे में है, मेरे में है, सब में है. That is none. That is ikyomkar. So we put it here. मोदी जी आए वहाँ, बड़ा अच्छा लगा, सेल्फी ली वहाँ. You know, that is, वो जैसे ही सेल्फी ली, हमें लगा है उनको belongingness था, उनको लगा है मेरा है ये. So that spirit has to be there. So man, that's why I am indicating. We put the complete history, the travel of Nanak. 32,000 kilometers Guru Nanak traveled. You know, all South Asia, Makkah to Sri Lanka to all these places, और वो हमने सारा दिखाया through art, through sculpture, defining the purpose through the various art form and the sculpture puts life. That is how we have to put life into a structure. This is how he inaugurated. This is all complete description of Nanak's thought. This is the now viewing tower, revolving tower on top, from where you can have a cup of tea or lunch and all. And this is now going under construction. So now I am just showcasing you the development. I have shown you land port, I have shown you railways, I have shown you aviation. Now these are ports, port harbors, fisheries. You know, like cruise. You know, that is what we are doing here. Terminal for the East Coast Cruise Center, where are the fishery harbor, Visakhapatnam fishery harbor. All these are again very ambitious projects which are under construction. Institutions. How do you create sustainable institutions? You know, this is in Delhi University, an academic blog. We wanted to, I'm just trying to, these are the various institutions we've done. Congo Engineering College, Anna University, IIM Ranchi, NIT Patna, all these we've been into, you know, these projects. This is how academic blog. No? This building is totally stimulated on computer, tool, and again looking into it, maximizing daylight, minimizing heat gain into the building. Stimulation, solar path, shade, sun, where it moves. This also moves. This is how we tried this. Now this is how your visualization, visioning, is getting hold of the spaces, you know, lively spaces, not dead mass. So this is how we created this. Now DMRC station, last mile connectivity, LG called us, he said, okay, we need to understand how the last mile connectivity has to be there. क्यों अभी क्या है, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलो, बाहर सारा बुरा हाल है. You know, I don't know कहाँ से बस मिलेगी, कहाँ से स्कूटर मिलेगा, कहाँ से क्या मिलेगा. How do you create that? So we worked on about, you know, these are the metro stations. Plus we worked on the feasibility study of Ahmedabad Gandhinagar metro line, and we done the Chennai metro. All these are again very ambitious projects, and this is what we did in Delhi. 29 of the DMRC stations. This is mega Ahmedabad Gandhinagar, where there are 28 stations. We were to make the feasibility study where can intermodality work, where I can have some sort of a, not only the station, but intermodal hub. So that is how we created Koba Circle, Badaj and Palji, Akshardham Temple and AEC as intermodal hub, you know, in the metro station, where you have TOD, we have various other facilities. So this is how these things were done. Intermodality, last mile connectivity from metro to terminal building. This is how, again, metro station. This is the metro station which we did in Chennai Airport outside. And now globally, we are very fortunate that we are now into
like in Gabon, Gambia, Rwanda, Kazakhstan, Belgrade, and Congo, Ghana, all these places again. Nepal, we're doing the largest, one of the largest airport, I would say, in the world, 20,000 hectares with 4 runways. We're doing alternative to Kathmandu at Nijghar. So these are again projects, like Ghan Airport under construction. We're making all this. Gabon, a greenfield again. This is complete master planning, everything. Mind it, we do A to Z in aviation. We have complete team. We talk about airspace conflict. We talk about ATC tower. We talk about runway design. We talk about everything, and we give the master plan of an airport. How do you do the feasibility study, return on money? All that is happening, and we are doing. And I am just showcasing that कि हम एक फर्म हमारी यहाँ पे उस लेवल पे आएगी ना, उस दिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड होगी. अभी हम बाहर से लाके इधर कर रहे हैं. हमें तब मजा आएगा जब यहाँ से हम बाहर देंगे. एंड देयर इज सो मच अपॉर्चुनिटीज. सारा अफ्रीका खाली पड़ा है यार, जितना मर्जी काम कर लो वहाँ पे. वी कैन डू दैट. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. Gabon, Nepal, this is largest, 20,000 hectares of land, and all this we are. And yellow, see, these are 4 runways. It's a large 20,000 hectare site. 2 बड़ी पहाड़ हैं वहाँ पे. एक इधर माउंटेन, एक इधर माउंटेन. उसमें डिप है. There were so many ecological issues. But we were able, 20 साल से 25 साल से प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन कुछ नहीं हेड एंड टेल होने थी. बट वी आर फॉर्चुनेट दैट आवर मास्टर प्लान हैज बीन अप्रूव्ड. जितने 4-5 जितने प्राइम मिनिस्टर पुराने थे, सब ने अप्रूव कर दिया है. सो नाउ वी आर मेकिंग द DPR. सो दैट इज हाउ वी डूइंग. And proudly I say that if some of you must be knowing Dr. Bhatti, he is a triple doctorate and a principal of Chandigarh College of Architecture. He was tempted to call me Patrick Gates of India, a sustainable architect. So that's why I put it. I feel so honored and pride. A triple doctorate calling me as a sustainable architect. So I humbly, proudly say, yes, thank you, Dr. Bhatti. That is the type of, this is what I also do. Smart Habitat Foundation, where we teach the students, we teach the trainers, we teach professors from various schools of architecture what to teach, what is required in practice of architecture, what India needs today. Our children, the new students need to understand what is EPC mode, what is PPP mode, what is BOT mode, what is the practice, how do you, and then the interface between the various practice of architecture. Today is not that I am only an architect, I need to be holistic. आज मुझे सबके साथ engulf करके engineering, many engineerings are to be taken engulfed with architecture, and then only we will be able to create purest of architecture and purest architecture. So these are the various books I have authored, and this is the last book अभी मैंने author की है, my autobiography. That's like Seed to Surrender. So how do you surrender to the Almighty, who is so graciously showering us with work and work and work. But ये ना भूलूं यार, मैं जो करूं वो भगवान को अच्छा लगे. वो ऐसा ना करूं जिससे सृष्टि में मैं कुछ हलचल मचा दूं. So that is ambitiously what we try to do. And lastly, we need to see that what we need. Today we're talking about all net zero energy, net zero water, net zero liquid waste. And we are doing all in all our project. We don't need to get anything from outside. Let's see, we produce our water. पानी भी पैदा कर सकते हैं ना. तो there are ways and means of doing all. Ways of जहाँ जगह मिल जाए सोलर लगा दो, जहाँ मिल जाए विंड लगा दो, जहाँ कोई जगह मिल जाए. And let's see we do that. And solid waste management is very important. वो पहाड़ बना रहे हैं हम. Let's see we incinerate, we do gas, waste to energy. How all these things are possible? It's only our mental, holistic architecture has to be done. तो जिस दिन मैंने वो कर लिया हो जाएगा. I also happened to meet our Honorable Prime Minister for half an hour, where we talked about even on to the build, smart cities. And we talked about how create Indian
sustainable smart cities. So that is, we are very fortunate to have such a lovely Prime Minister who listens to you. He listens patiently for half an hour. He interacted, he gave his vision, and let's see that how we create a new India of tomorrow. That's all. A big round of applause for Sir. Smart X.